सुन्वाय Maya. सहस्राय सर्वात्मय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के व्याख्यान की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर पूर्णिमा जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इमरजेंसी लेक्चर के रूप में हमें अपनी सहमति दी और आप यहाँ आज हमारी इनविटेशन पर पधारे। और इसके लिए मैं डॉक्टर जयाश्री पी गिरी सागर जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आपसे हमें मिलवा दिया। क्योंकि पहले डॉक्टर साहब का लेक्चर था, मगर कुछ ऐसे कारण हो गए कि जिनके कारण उनको आज का लेक्चर्स के लिए वो आने में असमर्थ थे। तो इसलिए डॉक्टर पूर्णिमा जी का तुरंत ही नाम आया, जो सामान्य रूप से मैं हमेशा स्पीकर्स के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हो सके तो एक सजेस्ट करिए, मैं भी ढूंढती हूँ, आप भी ढूंढिए। तो तुरंत ही आप मिल गए तो बड़ी आसानी से, वरना काफी परेशानी रहती है कि 8-10 लोगों को पूछने के बाद यस होता है फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इमरजेंसी स्पीकर के रूप में यस होती है, मगर उसके बावजूद भी उनकी व्यस्तता होने के कारण फिर है ना, अन्य लोगों को भी पूछना पड़ता है। तो जैसे डॉक्टर जयाश्री का भी धन्यवाद। और डॉक्टर जयाश्री मैम का हमने बाद में स्केड्यूल कर दिया है लेक्चर। और अभी हम डॉक्टर साहब का एक बार मैं परिचय आप सबके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर पूर्णिमा बी यू, जिनका जैसे वो मैंने उनसे पूछा भी अभी कि डॉक्टर पूर्णिमा बसवराज उंडी, इस तरीके से उनका पूर्ण नाम है। और साउथ में एक अलग विधा रहती है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहूंगी कि भारत, हमारा देश, अनेक विविधताओं वाला देश है। और ये विविधता, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, कई बार मैं सोचती हूँ तब कि जैसे अपने शरीर में बहुत सारे ऐसे सेल है जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग सिस्टम को संभालते हैं। कोई सफाई का काम है, कोई याददाश्त का काम है, कोई है ना मसल्स मेमोरी, नर्वस सिस्टम, ऐसे। तो हमारा भारत देश भी अनेक वेशभूषा, अनेक प्रकार का खान-पान, अनेक प्रकार की हमारी बोली और लिपि, और इसके साथ-साथ हमारा अलग-अलग प्रकार का क्लाइमेट, है ना? एक बार मैं जब आईएएस की तैयारी कर रही थी, तब मेरे टीचर ने भी बताया था, कुछ बुक्स में भी पढ़ा था कि भारत में, हमारे देश में हर प्रकार का क्लाइमेट है। चाहे वो चेरापूंजी, इट मीन्स के हाईएस्ट रेन, और राजस्थान का डेजर्ट, या थोड़ा सा गुजरात में भी है कच्छ का डेजर्ट। तो डेजर्ट भी है हमारे पास, पर्वत, नदियां, और बहुत सारी वनस्पति की विविधता तो है ना? अन्य देशों में भी है ये चीज, मगर इतना ज्यादा बाहुल्य, तो बहुत ज्यादा हमारा देश इस मामले में रिच है, समृद्ध है। और उसी समृद्ध भंडार के हम वाहक हैं, उनमें से एक आयुर्वेद भी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका यहाँ आज स्वागत है। आप अभी वर्तमान समय में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी जो कॉलेज का नाम है SDMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तेर तेरडाल कर्नाटका से अभी आप वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। अभी आपने IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में भी इस कॉलेज में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने बहुत सारी सहभागिता रही नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स के लिए, और साथ में आपने बहुत सारे साइंटिफिक सेशंस को, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपने चेयर किया है। इसके सिवाय भी आपकी अनेक कैंप और अन्य गतिविधियों में भी जो सामाजिक उपयोगी रहती है, उसमें भी आपकी सहभागिता है। और उसी का एक
उदाहरण आज का व्याख्यान के अंदर आपका यज्ञ में आहुति देने के लिए तुरंत उपस्थित होना भी घोषित करता है। तो इस मंच पर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और आज के व्याख्यान की आप शुरुआत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम. So before starting my session, I would like to extend my heartfelt gratitude to the whole organizing team of this Ayurveda Vishwa Parishad for organizing such a beautiful series of webinars. Okay, so where there is a lot of exchange of the experiences, the knowledge, okay? And by this we can upgrade ourselves. And today my topic for today's session is adaptogens and stress management in management, and I'll be presenting few clinical insights from different Ayurvedic herbs, that is from ashwagandha and other Ayurvedic herbs. Next slide, please, ma'am. So as you know, so today we are living in a chaos. The whole world is in the stress. So now this chronic stress has emerged as one of the contributors to lifestyle related disorders. So maybe it is including the anxiety, sometimes it comes as a depression, sometimes it's insomnia, sometimes we come across different metabolic syndromes and even the cardiovascular disease also. So when we have such a huge range of stress related problems, so and when we go for certain conventional pharmacological options, at that time we get to have certain the drugs like anxiolytics, or we go for certain antidepressants, or sometimes we are given stimulants. Okay, no doubt these conventional pharmacological options, they provide us with symptomatic relief. That's very good thing. But see, these things, they come with a huge set of side effects. And not only that, they also cause dependency. तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप जो हमें स्ट्रेस के वजह से जो डिफरेंट हमें मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं, या एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, सो वहां पे अगर वी गो फॉर द अदर सिस्टम, देयर मेडिसिन तो अच्छे हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन वो कौन से अब हमें वी हैव टू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर दैट. तो इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं दैट अगेन दे कॉज डिफरेंट what you call problems and symptoms. So at this juncture, it becomes very essential that we need to set a boundary and see in a different aspect. See कि जो अल्टरनेट साइंस में हम आजकल फिलहाल बोल रहे हैं अल्टरनेट साइंस, विच वॉज मेन स्ट्रीम साइंस in the past. So there we have a lot of scope for the herbs and the medicinal plants which can make our body to adapt to all these different stressors and make us what you call resilient towards these stresses. So in that aspect, now the adaptogens came into the limelight, and they were next slide please, ma'am, and restoring the hemostasis. So what these adaptogens, what they do actually? So ये कहाँ पे चाहिए? So क्यों चाहिए? क्योंकि आज जो हमें मालूम है ना कि आजकल जो हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, स्पेशली फॉर द स्ट्रेस एंड द डिप्रेशन, उसमें तो बहुत सारे डिफरेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो और उससे ज्यादा वो ड्रग्स पे हमें डिपेंडेंसी डेवलप होता है. तो इसके वजह से वी हैव टू लुक फॉर our system of medicines where you have got a huge range of drugs which are researched and which are proved for the stress management and which act very nicely on the mental disorders. Ma'am, next slide please.
So what are these adaptogens? So that is what these actually means. So this, I think this was the adaptogen, the concept of adaptogen was first framed, or it was given by the Russian scientist called as named as Nikolai Zarazhev in 1950. So these are nothing but the adaptogens are nothing but the natural substances. So basically they are herbs only. So that help the body to adapt to the stress, and not only to adapt to the stress, but they also normalize the physical processes. So whatever the body has undergone changes due to the stress, so that will be brought back by these natural substances. So what we call as herbs. So and in one aspect, we can put all these adaptogens under a category of rasayana drugs. Okay, next slide, please. So what these adaptogens mean to be? So as we know, we have got a huge range of herbs. So कौन से herbs को हम adaptogen बोल सकते हैं, और which adaptogen बोलने के लिए so कौन से herbs कौन से criteria में पढ़ना चाहिए? So the first is, here we can tell it is the resistance or increasing the resistance to the wide range of stresses. So as I've just spoken previously, so we are living in the era of stress. So we have to face different stress. It may be physical stress, chemical stress, biological stress, and even the psychological stress. So when we talking of physical stress, जो हम overwork करते हैं, okay, that is having lot of huge exercise, that is over exercising, having fatigue, then we are exposed to the temperature extremities. So that is like we see we have got a sudden shifts. हम AC में बैठे रहते हैं and suddenly we go outside. So where there is a sudden shift of the temperature. So at that time, our body goes into a sort of physical stress. Then overwork. So that is as we are in the race, what we call as rat race. So we like punish ourselves with lot of physical work. Okay, at एक तरफ, and at एक तरफ we go for a sedentary life. So both are a sort of physical stress. So there is a no normalance here. In the same way, we all are also exposed to different chemical stresses, like the pollutants. So the pollutants है अभी तो सभी जगह है, air pollutant है, water pollutant है. So मॉर्निंग उठने से लेकर हम सोने तक we are surrounded with the pollutants, starting from our toothpaste with the detergents. So we come in contact with these pollutants, and even the toxins also. So where we are maybe in the vegetables we have, or certain foodstuff we have alterations hai. So all these are nothing but the chemical stress what our body face. And next is the biological stress. Biological stress, where our body is exposed to different infections, where different organisms invade our body and we get inflammation, and sometimes there is a immunity suppression may be there, or sometimes there may be immunity what you call hyperactivity will be there. So this is the biological stress what we face in nowadays. And the last one, which is not to be ignored, that is the psychological stress. Like everybody nowadays, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, they all face the psychological stress, leading to anxiety, depression. Okay, then the different, the stress may be due to anything. It may be due to trauma, it may be simple. जो बच्चा सा उठता है तो उसको स्ट्रेस रहता है कि वो स्कूल का बस मिलेगा कहीं नहीं, और सोते वक्त उसको वो स्ट्रेस रहता है कि मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो होमवर्क. सो दैट इज what we face different stress. So that is also psychological stress what we face. So the criteria of the adaptogens, what these do is these basically increase the resistance to these wide range of stresses. They create what you call adaptation
to the body to resist these stresses. So that is the first criteria of the adaptogens. So from we have so many drugs that are told to be balya. So balya not only in context to the शारीरिक bala, it is in context to the मानसिक bala. जो ये stress जो सभी हम बोल रहे हैं, so they mainly prefer both for the sharira and even to the manas. So therefore, so the जो balya drugs है, so especially I am talking of the amalaki and ashwagandha, ये जो है, so these both they give bala to both sharira and manas. So in that way, these increase the resistance to different stresses. Then the second criteria for these adaptogens is they maintain the homeostasis of the body. So what these do is, so as we are exposed to different stresses, so there is a lot of variation. There is a deviation will be there of our physiology. There is a shift is there. जो normal physiology से it get deviated and it different pathological functions will start occurring. Pathology will start creating there. It'll start manifesting there. So now what these do is these are going to what do you call it? The adaptogens are going to build the body's ability to keep its environmental stable in spite of outside जो भी हम stresses लेते हैं, तो उसके as a reaction, so they make our body environmental very stable. So that is what we expect from these adaptogens, and that is in a simple words you can tell that the body returns to the balanced condition. So what these adaptogens do. Then the third criteria what we want them to be called as adaptogens, that is they should be safe and they should be non-toxic. So the adaptogen should be not, that is they are harmless in the normal therapeutic doses, and they should be non-toxic, they should be non-addictive, and they should be suitable for the long-term uses. So where all our drugs fit in this criteria. So therefore, nowadays a lot of research have been done on different the Ayurvedic herbs in concern to this adaptogenic activity. Next slide. Now coming for how these adaptogens work. So we'll go for a mechanism. Along with mechanism, so I'll be like revealing I'll be telling the relevance of the clinical importance of all these adaptogens. Okay, so basically these adaptogens modulate the HPA axis, and then they slowly when the modulation is done, the modulation is in concern to the normalization of the cortisol, in concern to the regulation of the neurotransmitter, and in concern to the improving the metabolism of the cellular level. So if you look at the next slide, if you look at the modulation, how it occurs. As we know, this HP axis is nothing but the hypothalamus that basically releases the corticotropin hormone, then the pituitary gland that releases the adenocorticotropin hormone, and the adrenal gland that basically releases the cortisol. So what these do is, so whenever this is the HPA axis is overactive, then it will lead to high cortisol levels. So cortisol, as we know, it's a basic stress hormone, and that leading to anxiety, insomnia, and different deviation in the metabolism, causing hypertension, then diabetes, immune suppression. On the other hand, if the same HPA is exhausted, then that lead to the low cortisol levels, leading to fatigue, then depression, then there will be very, very poor stress coping, leading to again various set of disorders. So basically these adaptogens, what they do is they are going to normalize the HPA axis response to the stress, especially the ashwagandha that balances the cortisol, tulsi,
like that regulates the immune system. Rami Shankha Pushpi, they modulate the neurotransmitters. Then Guduchi, it reduces the stress-induced immunosuppression, and Chatamamsi, that calms the hyperactive axis. Next slide, please. So now we'll be seeing the actual what do you call it? The thing how it is done. Okay, the first is regarding the normalizing the cortisol secretions. So it is one of the hallmark effect of the adaptogens. It's very very prime. So what is this cortisol? If you look at if you go for a very big cortisol, so cortisol is a body's primary stress hormone that is secreted by the adrenal gland via the HPA axis. So what it does is it usually increases the blood sugar level so that the energy supply will be increased. Then it also in the very high amount of cortisols, it can suppress the immunity and sometimes it can trigger also. And not only that, it can regulate the mood, then it is going to regulate the memory and even the sleep also. So whenever we have got a very high cortisols, so when there is a chronic stress is there, where the HPA axis is hyperactivated, at that time, the high cortisol levels are going to cause anxiety, the insomnia, then a metabolic disease like hypertension, diabetes, then obesity, and immune suppression. So what these now, what are the role of the adaptogens in normalizing these cortisol secretions? Okay. So, so whenever the cortisol is high, now these adaptogens reduces. The best example is ashwagandha. So the studies have shown that the ashwagandha can reduce 20 to 30% of the serum cholesterol. So we see that the ashwagandha where I have given to the patients, especially with the insomnia that is basically due to the stress. For them, ashwagandha जो अभी capsules आते हैं, तो that is given twice a daily for 2 months. So it was a very good improvement was seen in those patients with the insomnia, and even they were able to cope up with the stress also. So that is, so here basically I would have tell that is varfarin, vitaferin is a very prominent component that is responsible to lower the cholesterol, to lower the cortisol. So again, the ashwagandha can be given for 3 months up to 4 months. So where the patient even told that even their stamina increased and they were more enthusiastic in their work. Then the next drug is the tulsi. So even the tulsi reduces the stress-induced cortisol spike. So this is basically what it does is it inhibits an enzyme called as hydroxysteroid dihydroesterase. Okay, so that is very, very important enzyme for the production of the cholesterol. So once this is inhibited, now the cholesterol production reduces. So this is one thing. And one more thing, what the tulsi does is it also inhibits, that is one more potential, what do you call, enzyme, that is a catechol O-methyl transferase. That is again a very important enzyme to regulate the HPA axis. So बहुत क्या होता है, तुलसी the only focus only on the cough or cold. But this is one very unique aspect of tulsi, that tulsi can also reduce the stress hormones, and even it can decrease the cortisol, and even it can calm the mind. So that is how the tulsi acts. So these two drugs, so tulsi, which was given as a remedy for the cough.
Now it showed that it used to calm the person, and it was used in the insomnia also. जो हमने कॉफ के लिए दिया था, तो तुलसी का टैबलेट्स और कॉफ सिरप, एंड दैट showed that the person who was suffering from insomnia, he got result. So उसका जो sleeplessness था, तो that was reduced by giving the tulsi. Then like I counter checked it, and it gave that many studies were done. Basically tulsi, that it was reducing the cortisol, and it enhanced the immunity also. Okay, so these are two major drugs. So what I saw. Then very uniquely, so wherever there is a low cortisol levels, even that causes the problem. So the person will be very much, what do you call, very much restless, and the person will be very much fatigue. He won't have any energy. So wherever आपका जो cortisol level burn that is low होता है, तो burnout होता है. So the person becomes very much lethargic. So at that time, so there are two drugs. So what I encounter are the two drugs. One is the guduchi, and the second one is the yashti madhu. So yashti madhu, especially very basically speaking, so we know that Charaka have delineated in many of his Dashemanis. He tells it as a Jivaniya, very, very true. He tells us Brahmaniya, it is Sandaniya, it is Swarya, Varnya. So in that aspect, when I gave the Yashtimadhu, in a simple combination, Yashtimad with Madhu. Okay, so that gave a very good results. So Yashtimadhu basically, जिनमें cortisol बहुत low है, जिनमें adrenal fatigue है, Addison disease what we call. So at that time, so this plays, it gives a very, very good results. So what the basic mechanism of Yashtimadhu, I want to explain is, extends the lifespan of the cortisol. जो cortisol which gets broken down by again one more enzyme, that is 11 beta HSG2. That is the enzyme that breaks down the cortisol. उसका जो spike होता है, तो then it start breaking down. Now this Yashtimadhu, it is going to inhibit this enzyme, and thus it extends the lifespan of the cortisol. And this, at that time, the cortisol will be maintained. So therefore, it is very much useful in the Addison disease. So जब भी आपका adrenal fatigue होता है, now this is a very good drug. Yashtimadhu is the very good drug. And even the Guduchi also, the studies of Guduchi have also shown that it also elevates the cortisol levels when needed. So Guduchi have got both modulatory effect. It can increase the cortisol also, it can decrease the cortisol also. So that is what we call as the normalizing the cortisol levels. So therefore, Guduchi, जब भी हम देते in the Guduchi Sattva, so that maybe we are giving it for the Jwara, or sometimes we give it give it for the skin disorders. Now that have got a wide range of effect. So the patients, especially skin disease के जो patients आते हैं, again which are basically the stress related, by giving the Guduchi, you can see that there is lot of improvement. So whenever the skin के जो patient आते हैं, I'll give mainly two drugs. I prefer, one is the Arogyavardhini, second is the Guduchi. So Guduchi have proven a very, very good thing, that is wherever the skin related problems, basically especially जो hyperactive होता है, what we call as urticaria. So at that time Guduchi along with simple Madhu, so that has worked very nicely. And when I again retrograde में again research किया, both Yashtimadhu, Guduchi were found very good to both elevate the cortisol levels, especially Yashtimadhu, and even to decrease the cortisol levels. In one study, Yashtimadhu का जो एक study हुआ है, तो उसमें बताया गया था जो pregnant women में Yashtimadhu
दिया था. It was HT मधु extract. तो जो प्रेग्नेंट वुमेन में दिया गया था. So after their delivery and the cortisol, serum cortisol was tested for the children also. It was found it was elevated. So that is one thing. So whenever we have got risk, or if you have got certain genetic disorder, especially with the adrenal glands, so you can adapt the Yashtimadu even in the mothers. And one thing I want to tell that Yashtimadu, rather giving in the extracts, I would prefer to give a drug as a whole. तो अभी बहुत सारे कंपनीज जो एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं यष्टिमधु के, तो ग्लाइसरीजन के एक्सट्रैक्ट रहता है, तो उसके कैप्सूल्स आते हैं. बट आई प्रिफर गिविंग द ड्रग एज अ होल, बिकॉज समटाइम्स एक्सट्रैक्ट उसका डोसेज थोड़ा कम होना चाहिए. बट व्हेन यू आर गिविंग ड्रग एज अ होल, इट इज मोर सेफर, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next slide. So that is what. So if you look at the clinical benefits of the cortical normalization, so where all you can give this. So one is these drugs, especially the ashwagandha, tulsi, yashtimadu, they have reduced the anxiety and irritability of the patient, and they have improved the sleep quality, and not only that, they have boosted the energy levels of the patient and giving a very, very good immunity, of course, and they also lower the risk of stress related metabolic disorders. So that is the uniqueness of our Ayurvedic drugs. So हम एक के लिए medicine देते हैं, so other many things they get cured. Okay, so that is the clinical relevance of the cortisol normalization. So next slide please. So therefore, adaptogens not only block the cortisol, or they also normalize its secretion. So that is what you call very uniqueness of the adaptogens, of the herbs, and they ensure the right balance and the resilience and the recovery of the patient. Okay, so that is about the cortisol normalization. Then the adaptogens, they work by regulating the neurotransmitters. So as you know, so we have got neurotransmitters. Here I have mainly taken the 3 neurotransmitters or 4. So this is again another key mechanism of the adaptogens. So is their ability to regulate the neurotransmitters like serotonin, then dopamine, and the GABA. So serotonin, as we know, it is basically a mood stabilizer that is very essential for the sleep, very essential for the emotional balance, and the dopamine, of course, we know it's called as a pleasure hormone. Not only that, it also very crucial for the focus and the concentration, and not only that, it is very important hormone for the motivation. If the dopamine is there, the person will lack the motivation. And GABA, as we know, that is gamma aminobutyric acid. So it is the calming hormone. So wherever the neuronal excitement is more, where the neurons excite too much, now this comes there, and it is going to calm the overactivity of that particular the neurons. So wherever there is low serotonin is there, the person will obviously have depression. They'll be having a lot of mood swings. Then there'll be very poor sleep. And there'll be agitation will be there. Then the person may get OCDs. Okay. So one more thing. Today's word mental health day, mental health awareness day. So maybe all these drugs, like, they help a lot to all the patients with lot of mental disorders. So there'll be difficulty in learning and memory, and even if the dopamine goes low, then there'll be fatigue. Then the patient will be always very much sad. There won't be any motivation. Then the patient can't
complete the task. Even simple task, getting up from the bed, even that becomes very much problematic for the patient. Okay, and the patient won't be focused. He'll be very much distracted. Then he'll have a lot of behavioral changes. And next step is when there is a low GABA is there, the patient becomes very much restless, and he'll be having hyperactivity, what we call as sometimes ADHD. So all those will be the disorders related to the low secretions of all these neurotransmitters. So how these adaptogens help? So how these basically help? So I'll start with the drugs only. So as I've mainly focused the 4 to 5 drugs today. So ashwagandha. So as I've told, ashwagandha, so it enhances the GABA activity. So it has got the calming effect. So when we look at the root extract of these drugs, it has got withanones. And withanones, when we look at the structure of the withanones, they mimic the GABA. So because of that, the GABA, these withanones, they bind with the GABA receptors and increase their expressions and functions. So by this, what happens? This enhanced GABA signaling, it is directly linked to the ashwagandha's anxiolytic and sleep promoting activity. So for the many patients who suffer with insomnia, who come as insomnia as the major problem, whatever the cause may be, whatever it may be, as I've told, it may be stress, or it may be the age, or it may be any other disease. So what I have experienced is giving simple ashwagandha. I've basically given ashwagandha capsules. So that is going to regulate their over active neuronal chatter. So they have told that they are getting a very good sleep by taking the ashwagandha capsules. Then the next drug I want to focus basically for the the neuron modulators, the R is the Brahmi. So Bacopa Manuri, what we tell. So basically this is a very good drug that increases the serotonin level in the hippocampus. Not only that, this supports the dopamine. The Brahmi can boost dopamine levels, by which it can uplift the mood. It can counteract the emotional disturbances. Okay, and not only that, the Brahmi is a very beautiful drug that it promotes the GABA. By that, it is going to give a relaxation and calming effect to our whole neuronal system. And along with that, the Brahmi also has the increased, that is, it is going to increase the acetylcholine. So especially the two active components, that is the bacosides, they are going to increase the acetylcholine. By that, it is going to increase the cognitive functions like memory recall and the attention span. So again, Brahmi, so usually I give in form of Grutha, the Brahmi in the form of Grutha, because it is seen that these bacosides, they are well extracted in the fat media. So the Brahmi Grutha, when it is given simple before food with either lukewarm water, so that has seen that especially in the old age patients, so where they had got amnesia, very early phases of amnesia, so that was they had got a very good recovery. So with the Brahmi Grutha. Then the next drug, what I want to focus here is the Shankapushpi. Okay, Convolvulus that is prudicollis. So many of us know this is Shankapushpi. So this Shankapushpi, again, having two important components, that is cobalamin and scolopoltine. So these
again it is a very good drug that is acting on the GABA. So it reduces the anxiety and improve the sleep. Very beautiful drug that is given in the children, the hyperactive children. So many patients come with major two complaints. That is, the child is not able to concentrate properly, and the child is not able to, like, he is very much restless. Okay, so he'll take a book for a few seconds, again he leaves, and again he goes. He switched to other activities. At that time, this is one very, very good, that is Chanka Pushpi syrup. We everybody know. So that gives the calmness to the child's mind. So especially the children who are hyperactive, it has got very good results. They get a very good sleep. अगर आप किसी को भी शंकर पुष्पी सिरप दिया है तो बच्चे बहुत अच्छे सोते हैं, and their focus increases, concentration increases, they become more calmer. Okay? So this is one drug. Then the tulsi. So as I've told, again tulsi both regulates serotonin, dopamine. It is also anxiolytic and antidepressant. So this is so nowadays we are in the era of, अभी recently हमने देखा है कि कितना cough syrup has caused so much of havoc. Okay, so it has taken the lives of many small children. So now the same tulsi, which I had given it basically for the cough, especially two patients came telling that their mood was elevated. So that is again because it acts very nicely on the dopamine. Not only it is a very good immuno modulator, but it also has the effect on the dopamine, elevating the mood. Okay, so the patient come and tell. Okay, then the next drug, what I want to focus one more is the Jatamamsi. So this is a very unique drug. Okay, so that what do you call it? It inhibits one enzyme, that is monoamine oxidase. This is one one enzyme that breaks down the neurotransmitters, that is serotonin and dopamine. So once these neurotransmitters are broken down, their concentration goes down. So now this is going to inhibit that. So it is going to inhibit that. Obviously, there is a very good, it acts like a very good anxiolytic. And not only that, it promotes relaxation and reduces the anxiety and even the fear. So that will be reduced by giving the Jatamamsi. So Jatamamsi, like I've given to very less patients. Especially I've given in combination Jatamamsi and Ashwagandha to the hypertensive patients. So where they were very much anxious, so that anxiety has been reduced. So next slide. So here, so one thing I have to focus on these adaptogens, these drugs is, so whenever we give the other conventional medications, like if the patient has got insomnia or the patient has got anxiety, so giving certain drugs like caffeine or the tranquilizers, what they do is either they overstimulate or they oversedate. Now we have got very good drugs like these drugs. They actually normalize the neurotransmitter levels, not overstimulating them also, or neither over sedating them also. So that is very uniqueness of the adaptogens. And very important is they also not cause the dependency. So this is very good thing to manage the stress in relation to the mood, sleep, memory. Okay. Then comes I want to tell the adaptogens in relation to improvising the metabolic
that is cellular energy metabolism, and even their antioxidant effect. Okay. So whenever the stress occurs, so whatever stress it may be, as we have seen, so it basically starts giving the oxidative stress on the cells, and then next it drains the energy at the cellular level. So when this occurs, when the oxidative stress occurs and the energy drainage occurs at the cellular level, it causes to brain fog, then low stamina, then fatigue, then there will be mitochondrial dysfunction will be there, and this leads to the faster aging. Then obviously, not only that, even the immunity get weakened, okay, leading to different disorders. So all the degenerative disorders are due to this particular problem only. So that is basically the stress hampers the mitochondrial functions. Okay, now how these adaptogens work? Okay. So these first improve the cellular energy metabolism. So what they do is they stimulate the mitochondria to enhance the ATP production, so that the more energy will be produced and the energy will be maintained. Then not only that, they also improvise the oxygen utilization by the cell, so that and they they protect the mitochondria. In one sense, they protect the mitochondria, and they stabilize the energy and not leading to the fatigue. So I would directly jump to the examples here. So the first example I would give here, the ashwagandha. So it improves the stamina, then it reduces the fatigue. Here, so the studies have shown that this ashwagandha, it is going to regulate the mitochondrial function and produce the good amount of ATP. So that's why what happens, the ashwagandha, when taken by the athletes, so their performance increases. Okay, the endurance increases. Okay, and ashwagandha have got primary phytosterols, even that is going to add up the performance of the athletes. Okay, then not only that, so that is the ashwagandha. So whenever the ashwagandha is given to the patients, I have told the ashwagandha जब मैंने दिया था, तो insomnia के लिए दिया था, though that not only insomnia उनका कम हुआ, but they felt that their stamina increased. They were able to work very much efficiently. Their physical strength increased. Okay, so the people who used to get very much tired especially in the evenings, they told that they had उनका जो energy level था, that was वो दिन भर रहता था, लेकिन शाम को वो थोड़ा they used to feel tired. उनको लगता था कुछ नहीं करना है. But so by taking the ashwagandha, they told that the energy level maintained till the night. Okay, so that what I experienced. Then one more is Brahmi. So Brahmi stimulates, like it is a sort of a neurogenetic, or it induces the neurogenesis. So it stimulates the growth of the dendrites. And thus how it supports the brain plasticity. And not only that, the Brahmi enhances the synaptic transmission. So जो Brahmi हम जब लेते हैं, तो उसका जो nerve impulse का travel का जो mode रहता है, so it will be enhanced. So by that what happens, there will be improvement in the learning speed and the memory also. So again, for the many patients, especially the Brahmi I have given for the elderly patients, rather than the children. Children I have used Shankapushpi more. So Brahmi in elderly I have given. So especially the people who come with
the problem with their eyesight, with the ear, and their memory. So for them, it has shown a very good results. Then even I have given the Guduchi also. So Guduchi, where I have especially used in the skin diseases rather than in the cognitive function में तो उतना नहीं किया है, but Guduchi I have used it in the skin problem, but the Guduchi have also shown that it reduces the mitochondrial dysfunction. So the stress which is going to like act as a toxin, okay, so and produce different metabolic disease like the skin disease. So there it is going to reduce the mitochondrial dysfunction and improve the activity of the mitochondrial electron transport. So that is how it works. Okay, then next what I am to tell is, yes, this is about the metabolism. Then giving for its the antioxidant property. So as everybody knows, I think it is not a new thing. Everybody knows that. So these adaptogens, they boost the antioxidant defense. So especially many studies have revealed. So जितने भी हमारे जो drugs है, so they have screened ashwagandha, guduchi, then vacha. So all these have been screened for their antioxidant property. अब कोई भी हम आयुर्वेदिक drug लो, they will be having n number of oxidants, and many components act like antioxidants. And not only that, these adaptogens, they also increase the endogenous that is antioxidants like superoxide dismutase, catalase, glutathione. तो उनको भी इंक्रीज करता है, एंड अलोंग विद दैट दे रिड्यूस द लिपिड पेरोक्सिडेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है, सो विच इज अ प्राइम कॉज फॉर द सेल डैमेज, तो उसको भी ये कम करते हैं by as they act like antioxidants. So here I think these are the two good antioxidants what I feel, that is one is the Guduchi and one is the Tulsi. So Guduchi basically a very good immunomodulator है, and Tulsi very good it is antioxidant, especially for the respiratory system, and Jatamamsi especially for the neuronal damage जो होता है, तो उसके लिए a very good antioxidant drug है. So the people who are at the risk of having certain neurological disorders, जिनको जिनके like the family में history है having a neurodegenerative disorders like it may be Parkinson's or that is amnesia or schizophrenia, for them I think giving Jatamamsi and Brahmi, so as a prophylactic, it's preventive, that is a very good thing. Okay. Then going for the next slide please, ma'am. Yes, next slide. So what are the clinical benefits of the of these is they cause less fatigue. In concern, I'm talking in concern to they are boosting the immunity and regularizing the metabolism. They slower the aging process. Then they protect the vital organs like brain, heart, liver from the stress damage, and they also give a very good recovery from the chronic illness. Okay. Now coming for the clinical applications, so where all these adaptogens can be applied. Next slide please, ma'am. Where these can be very nicely used. The first what we can do is these can be very nicely used in stress and anxiety disorders. So next slide please, madam. So that is जनरल एंजाइटी जो डिसऑर्डर रहते हैं, या स्ट्रेस इंड्यूस्ड इंसोम्निया है, या अपना बर्नआउट है, सो दैट इज इन द फटीग है. So there, especially ashwagandha, then tulsi and jatamamsi have got a very, very good results. And then very nicely, these can be used in the cognitive functions, improvising the cognitive functions and even the mental fatigue. So जो student where they go for the exams, जो stress है आजकल तो इतना stress है exams का,
So for them, the children get exhausted. They'll get mental fatigue. Then it can be a very good. All these drugs can be given in case of ADHD, not only as a supportive therapy, as their main therapy also. These can be given. Then जितने भी cognitive decline होते हैं elderly में, okay, in that all these things, Brahmi, Shankapushpi, they give a very, very good results. Then in all the sleep disorders, so it may be a primary insomnia, or it may be the sleep disturbance due to depression or anxiety, or it may be a non-restorative sleep due to burnout. So in all these, any of the sleep disorders, like giving these drugs with different combinations, with different anupanas, so these act very, very nicely. Okay, then we have got these drug act very nicely in case of immune dysregulation and in chronic illness. Okay. So as I've told, so जहाँ पे भी हमारा immunity dysregulate हुआ है, either it may be hyperactive or it is hypoactive. So in recurrent respiratory infections, in autoimmune disorders, and as a supportive therapy in cancers, it may be in the chemotherapy में you can give it as a recovery therapy. So these many studies तो बहुत हुए हैं इसके ऊपर, so they act very nicely, and many studies have shown that the drugs are adaptogens, especially ashwagandha, guduchi, amalaki, have given a very good result in preventing the chemotherapy side effects. And not only that, in metabolic and lifestyle disorders, so hypertension, very well known, that is metabolic syndrome, like IBS, then type 2 diabetes, like these drugs can be given both as preventive aspect also and therapeutic aspect also. Then neurological and psychiatric disorders, so it may be mild to moderate depression, dementia, Parkinson's disease, then in ADHD, again in cognitive disorders. So in all these diseases, these drugs, these herbs, especially what I practice, they have given a very, very good results. Okay, so this is all the clinical applications for the adaptogens. So in the further slides, I have just given a brief description of the drugs along with their next slide, ma'am. So जो आने वाले जब भी स्लाइड्स है, तो अश्वगंधा, so कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, तो especially ashwagandha can be used to reduce the stress, anxiety. So what I have observed, तो उनमें थोड़ा मैंने डाल दिया है इसको. Ashwagandha mainly acting in these to enhance the memory, concentration, and especially fatigue. It increases the stamina. Then the next drug is Brahmi. Next slide आप scroll कर सकते हो. That is, it is, as I've told, it is very good, especially in case of cognitive decline and mental fatigue and learning and memory. तो ब्राह्मी का जो रोल है वो बहुत अच्छा मिला है रिजल्ट. एंड तो स्ट्रेस इंड्यूस जो भी कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो एल्डरली में, तो देयर ब्राह्मी has given a good results. Then next is Shankapushpi. Shankapushpi, as I've told, it is I have mainly given in case of the children. So it has reduced the anxiety, irritability of children. Along with that, it has increased the learning capacity of the children. So next slide is regarding the Tulsi. So Tulsi, as I've given, it is basically it is good for the stress adaptation, especially in concern to the immunity. जो immunity compromised patients रहते हैं, so especially the with bronchitis, that is chronic bronchitis patients, for them this drug have given a very good results. Then the next slide is regarding the guduchi. Again, guduchi, very, very frequently I have used this in both, again, immune suppression, again immunity, what do you call it? Immunity compromised patients, especially in skin diseases. It has given a very, very good results. Okay, then coming for the Chatamamsi, like I have again used, especially in case of anxiety and
in hypertension, anxiety induced hypertension, and there this drug have given the results. So इसमें तो उसको निद्राजन और मेद्य बोला गया है, but there I have given the results. Then the next drug is st madhu. Next slide. st madhu. So isko, as we tell, it's a very good rasayana, and this drug basically have given good results in case of low cortisols. Okay, the patient who come with a long-term fatigue. Okay, for them it has given a very good results there. Okay, so that so in the next slide. So in conclusion, the Ayurvedic adaptogens can be like taken as a rasayana herbs that basically go for the balance of the body, mind, and immunity. So adaptogens in clinical practice are not only just to treat the disease, but they build the resilience, and not only that, they prevent the diseases, okay, that are due to the stress, and not only that, they act like, and if the patient is in the recovery stage, even they support that recovery. So with this remarks, I would like to thank all the organizers, Dr. Hetal madam, for giving this platform to me to share my views, and to share my experiences. Hope like I am able to reach out everybody properly, and so if anybody have suggestions in concern, I would I'm very much welcome those suggestions. So I once more thank Rashtriya Ayurveda Parishad for giving this opportunity. Thank you. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन प्रत्येक स्लाइड पे आपने इतना सुंदर तरीके से किया है कि मैं बता नहीं सकती। सारे ही पार्टिसिपेंट्स ने भी नो डाउट बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, और वो अपने पेशेंट्स के ऊपर भी उनकी ट्रीटमेंट करते समय वो इस बात का सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका उपयोग करेंगे। और देखिए बहुत सारे इसमें वो रिमार्क्स भी आने लगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अनुपमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर नवीन जी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मोहम्मद कैफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले डॉक्टर अनीता कौशिक जी ने भी इसकी बहुत अच्छी सराहना की है, और डॉक्टर उज्ज्वला जी हमारी रेगुलर व्यूअर है और बड़ी जिज्ञासु है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उज्ज्वला। डॉक्टर चंद्रकला जी बहुत सारा धन्यवाद इस व्याख्यान की सराहना करने के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम इन औषधियों का प्रयोग अगर सीख जाते हैं, अपने वात पित्त कफ की समावस्था लाने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है कि हम उसका कहीं बार ऐसा है ना कि भाई जैसे मैं जब आज से 27 साल पहले नई नई एमडी करके निकली थी, और एक पेशेंट जब क्रॉनिक कंडीशन में आता है तो वो 4-5 आयुर्वेद की प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं। तब मेरी दिमाग की गायरस सल्कस हिल जाती थी कि अच्छा ये भी दे दिया, इससे भी ये ठीक नहीं हुई। अरे यार, हमने मैडम को देखा था, उससे तो ये हो जाते थे ठीक, कि कैसे ठीक नहीं हुई। तो ऐसे कंडीशंस में भी ये जो आपने इतना इलाबोरेट करके सारा मॉडर्न साइंस से भी कोरिलेट करते हुए बताया, और हम सबके लिए कितनी बड़ी प्राउड की बात है कि वही सारे फंक्शंस पता नहीं कब से, है ना, आचार्यों ने लिख रखे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपत्र की कार्बन डेटिंग से जो समय आता है वो उसके लिखने का समय नहीं है। वो कई वर्षों पहले ढूंढा गया था, फिर हर पिता ने अपने पुत्र को या शिष्य को दिया, और उसके बाद कहीं एक समय ऐसा आया कि उन्होंने लिखना शुरू किया उसको भोजपत्र के ऊपर, है ना। तो बड़ी अखंडित एक ज्ञान की श्रृंखला रही जिसके माध्यम से ये ज्ञान संजोया गया। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। मैं चाहती हूँ कि कोई भी जी जी डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। अभी
जी बताएं। नहीं, अभी क्या होता है, पेशेंट्स ऐसे आते हैं मैडम जो उनको हर एक, अगर आपने कुछ भी दे दिया उसका पूरा उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आजकल तो अवेयरनेस भी बहुत हो गया है पेशेंट्स का। अगर आप एक भी इसका ड्रग दे दिया तो उनको उसका हर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो कौन से सिस्टम पे कैसा एक्ट करता है, तो वो हमें बताना ही पड़ता है। तो इसलिए ये शायद इसलिए मैंने इसको थोड़ा उसको डाल दिया कि ठीक है, उसका थोड़ा मॉडर्न मैकेनिज्म भी डाला तो अच्छा रहेगा करके मैंने इसे डाला है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया डॉक्टर साहब। डॉक्टर उषा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय पहले, मैं जब वहाँ जयपुर में पढ़ाती थी, तब मैंने एक स्टूडेंट के साथ बातचीत में कहा था, जैसे बहुत बार एज अ टीचर हमारे पास इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, और मैं जब नए नए योग लिखती हूँ, कभी अष्टांग संग्रह से, कभी अष्टांग हृदय से, भाव प्रकाश, वृंद माधव से, जब आप प्रेजेंट कर रही थी, तब मुझे वृंद माधव जी का अश्वगंधा घृत वंध्या में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। तो वो रिजल्ट भी याद आ रहे थे कि कितना जबरदस्त वृंद माधव जी का, मैं सिंपल अश्वगंधा है, उसमें कुछ भी नहीं है। अश्वगंधा मुख्य द्रव्य, बाद में गोदुग्ध, है ना, और जल, और बस ऐसे कुछ भी और द्रव्य नहीं है, सिर्फ अश्वगंधा, है ना। क्योंकि हम पीजी करवाते समय हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि देयर शुड बी नो सो मैनी ड्रग्स, है ना। क्योंकि इतने सारे बच्चे जब पीजी करते हैं तो उन सारों की फार्मेसी में दवाई बनाना इजी होना चाहिए। और हम अगर इतने ज्यादा, इसमें एक दो संदिग्ध भी होते हैं, एक दो पहचाने नहीं जाते, एक का मूल नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे सिंपल द्रव्य लीजिए जिससे हम आपको दिग्दर्शन कर सके कि ऐसे रिसर्च होती है, और आगे आप अच्छे एक रिसर्चर बन के निकले और कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे। तो इस हिसाब से वन ऑफ द माय स्टूडेंट हैज सर्च आउट द वृंद माधव डिस्क्राइब्ड अश्वगंधा घृत, और सच में बहुत अच्छे रिजल्ट रहे उसके। और आज इतने सारे आपने इसके एक्सप्लेनेशन दिए, तो मुझे उसका ड्रग रिव्यू याद आ रहा था कि सही में बहुत ही अच्छा वर्णन किया आपने। और मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेंट में से किसी को कुछ ऐड ऑन करना है तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ अपने पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैंने अपना यहाँ से माइक्रोफोन टर्न ऑन कर दिया है, तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आज बच्चे सारे पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल अच्छा ज्ञान में अवगाहन हो गया है, तो देर इज नो क्वेश्चन। एंड मैं अभी आप सबसे, अच्छा अनीता जी पूछना चाहते हैं। जी अनीता जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी हाँ, डॉक्टर अनीता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के बाद माइक को म्यूट करिएगा। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ डॉक्टर आवाज अनीता, आ आप रही पूछ है? लीजिए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, आप म्यूट ही जी। रखिए। डॉक्टर मैं अनीता तो जी अभी पूछेगी। जी अनीता जी पूछिए। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे एमआई के हैं या कुछ हैं, तो उनको बाद में कुछ मेडिसिन वगैरह दिया जाता है एंजियोप्लास्टी के बाद। तो उसके बाद क्या उनका ऐसा असर रहता है कि भाई थोड़ा मेमोरी पे इफेक्ट आने लगता है? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? ये जो है ना, जो आपने बस बिल्कुल सही बताया है। सी इवन क्या बोलते हैं, इवन सर्टन मेटाबॉलिक डिजीज या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इवन दे आर ड्यू टू द ड्रग्स ऑल्सो। जो अभी मैंने बताया कि इतने सारे ड्रग्स रहते हैं, दे कॉज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देयर नर्वस सिस्टम। So there also you can give these drugs, so which are supportive as a cardiovascular, for cardiovascular भी supportive हो, और उसके साथ उसके that is neurology में भी support हो। तो ऐसे drugs है। तो जैसे अभी जो अश्वगंधा ही है, so it acts on the both aspects, and even अर्जुन भी है।
So you can combine these and you can give this. जी डॉक्टर मैं साहब। बस एक बात और पूछना चाहती थी कि जैसे हम बोलते हैं कि घृत दे दीजिए, जैसे अश्वगंधा घृत के रूप में अगर हमने हाँ दिया है या ब्राह्मी घृत दिया है, तो हाँ क्या हम ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं? फिर उनको थोड़ा दिक्कत होगी, ऐसे लगता है कि भाई नहीं बिल्कुल। देना चाहिए घृत तो। हाँ नहीं 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 मैडम, जैसे हम अभी तो वो तो बहुत बड़ा मिथ है. सी व्हेन यू आर गिविंग द घृता इन अ प्रॉपर क्वांटिटी विद अ प्रॉपर अनुपाना, the studies have shown that your cardiovascular system will be working very very nicely. जो अभी जो क्या बोलते हैं लॉबी चल रहा था ना, घी इज बैड फॉर द हार्ट, तो अभी वो तो थोड़ा कम हो गया है. द कॉज यहाँ पे कॉज क्या है मेन फॉर द, अभी जो आपने बोला है एम आई, द मेन कॉज फॉर द एम आई इज द स्ट्रेस इटसेल्फ. जो हमारा डाइट है वो भी प्ले करता है रोल, ऐसा कि नहीं है. बट व्हेन यू आर where the prime cause of the MI is the stress, there you can definitely give the Grata 100%. So मैंने almost 2 to 3 patients ऐसे हैं जो they have got cardiovascular disease. For them I tell them to take ghee in a very maybe half spoon या 1 spoon तक. Yeah, I'll tell them to take ghee, but it should be along with the sip of hot water, not warm water, hot water. तो वो उसमें हॉट वाटर में उसको घी को डालना है एंड दे शुड सिप लाइक अ टी. सो दैट हैज गिवन देम अ वेरी गुड रिजल्ट्स. जी ओके, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद वेरी डॉक्टर मच. साहब। जी धन्यवाद जी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछे और उधर से डिस्टरबेंस ज्यादा है तुरंत बंद करिएगा. माइक्रो एल्बुमिन यानी क्रियाटिन लेवल को सुधारने के लिए, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट में किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है, उसको सुधारने के लिए कोई औषध या दवा होगा तो बताइए. हाँ सर, अभी तो शरपुंका इज अ वेरी गुड ड्रग सर फॉर दैट. शरपुंका ओके Sharapunka actually, Sharapunka is good, but what you have to do is you have to collect it yourself. अभी मार्केट में हम जो Sharapunka करके लेते हैं उसका genuine नहीं लेते. So that is best drug. Sharapunka is a very good drug. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू उज्ज्वला, डॉक्टर उज्ज्वला आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए. नमस्ते मैम, बहुत ही अच्छा था सेशन, थैंक यू सो. मुझे तो लाइक हमारे बारे में ही पूछना था कि जैसे हमें ही कभी कभी एंजाइटी हो जाती है पेशेंट की वजह से कि क्या चिकित्सा है, मतलब उससे तो मुझे पूछना था कि हमें क्या ले सकते हैं वैद्य डेली, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हमें नींद नहीं आती, हमेशा हर एक पेशेंट में अलग अलग विचार करना पड़ता है, तो आप ऐसे कुछ सोचते हैं क्या आप? मैडम बेस्ट इज अश्वगंधा. मैडम अश्वगंधा इज द बेस्ट. जो क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है ना, इट इज ड्यू टू योर वर्कलोड, तो दैट इज इन माय ओपिनियन अश्वगंधा इज अ वेरी गुड ड्रग फॉर यू. मैं बहुत से लोगों को अश्वगंधा का कैप्सूल देती हूँ. यस यस, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे जब मैं कुरुक्षेत्र में 2006 से 2010 तक रही मैं टीचर, तब मैंने एक मेरी स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रही थी, उसको अश्वगंधा यष्टि मधु दिया था. अश्वगंधा 3 ग्राम, यष्टि मधु 1 ग्राम. तो उसने मुझे रिपोर्ट किया था 15 दिन बाद जब वो मिली तब, कि मैडम मेरी पढ़ने की क्षमता डबल ट्रिपल हो गई, और जो मैं सुबह 5 यस बजे की सर. पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे रात को 11 बजे फिर यूं जबरदस्ती सोना पड़ता है कि नहीं अब थोड़ा सो जाऊं, तभी मैं फिर से 5 बजे उठ के पूरा दिन भर, है ना, 5 से 5 एनर्जेटिक, मगर रात के शाम के 5 PM टू 11 PM भी इतनी एनर्जी कि और एक चैप्टर खत्म कर सकती हूँ मैं, है ना. और पढ़ने में जो कहते मेरा प्राइम टाइम था,
है ना, कि कुछ अच्छे समय में हमें टफ टॉपिक उठाने पड़ते हैं, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो हम ऐसे रिवाइज वाले टॉपिक उठाते हैं। तो उसमें उसने बहुत अच्छा दिया था कि मैडम, मेरी एबिलिटी, है ना, बहुत ही अच्छी बढ़ गई, कि जिससे मेरे यूनिट टेस्ट वगैरह अच्छे हो गए। ऐसे मेरे पास वहाँ अ, जयपुर में भी पेशेंट है, जो महारानी कॉलेज में वो पास आउट है, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ द जयपुर, एंड जहाँ 98% वाली बालिकाओं का एडमिशन होता ओके। है, तो वो वहां से भी आईएएस आईपीएस बहुत सारे अफसर्स निकलती है बालिकाएं। तो उनमें मैंने रजस्वलाचर्या और जोड़ा, कि अश्वगंधा वगैरह जो आपको उचित लगता है वात पित्त कफ के अनुसार वो हाँ। दीजिए, और साथ में रजस्वलाचर्या बताइए। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट है, रजस्वलाचर्या से भी हम्म। वो जबरदस्त एचपीओ एक्सिस को गुड। संभालता है, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला, बहुत या। बहुत धन्यवाद। यस। जी, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैडम, डॉक्टर साहब देना चाहे? हम दैट इज कुछ नहीं मैम, दैट इज हमें तो मालूम है कि हम जब भी कुछ मेडिसिन देते हैं तो इट शुड बी अलोंग विथ उनका प्रकृति और अग्नि और उनका पोस्ट देख के देते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ है, बहुत से सारे एक्सट्रैक्ट्स आ रहे हैं अभी, जो जो हमारे क्लासिकल प्रिपरेशन छोड़ के अभी जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन आ रहे हैं, तो आपको इतने सारे ड्रग्स के ओनली सिंगल ड्रग्स मिलते हैं, लाइक शतावरी होने दो या यष्टि मधु होने दो, अश्वगंधा हो या अर्जुन, यू गेट अ सिंगल ड्रग्स। सो वहां पे यू गेट द एक्सट्रैक्ट्स। जब आप एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं, सो सी दैट आपका डोसेज बराबर हो, स्पेशली फॉर द पित्त प्रकृति वालों को जब देते रहते हैं, सी दैट यू आर यूजिंग इट इन अ प्रॉपर डोसेज। सो दैट आर द लास्ट रिमार्क्स। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, और इस ज्ञान यज्ञ में आपने समर्पित भाव से जो आहुति दी है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी होगी। और कहीं ना कहीं हमारा एक उद्देश्य है कि आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो, और जिस दिन घोषित हो उस दिन हमारी ब्रिगेड तैयार हो, कि नहीं, हम बिल्कुल तैयार है, और हम भारत के लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, और कोई रोगार्थ है तो उसको स्वस्थ करने के लिए भी हम सक्षम हो। आप सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से मैं मैडम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश जी शर्मा जुड़े हुए हैं, और मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। वो वहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था में मेरे कुलीग भी रहे, और बहुत बार इमरजेंसी स्पीकर के रूप में डॉक्टर भुवनेश जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो मैं इसलिए भी आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताती हूँ कि ये बहुत सारे स्पीकर्स के समर्पित भाव से यहाँ आकर अपना नॉलेज बांटने के कारण चल रहा है ना। तो इसलिए एक दिया है, प्रज्वलित है, तो उसमें घी, तेल, है ना, स्नेह द्रव्य हमेशा आपूरित हो रहा है। तो आपको भी ऐसे आगे आना चाहिए, चाहे जैसे अभी एज अ कोऑर्डिनेटर काम करना हो, एज अ स्पीकर काम करना हो, एज अ, है ना। तो मुझे लगता है कि हम सबकी सहभागिता कहीं ना कहीं हमारे अंदर हितायु को मेंटेन करती है, हितायु को आगे बढ़ाती है ना। सुखायु तो है ही, सभी लोग जानते हैं सुखायु, मगर हितायु हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अगर हम आगे आते हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज से जोड़ भी देता है, और हम एक अच्छे चिकित्सक भी बनते हैं। ऐसे मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन से ऐसा लगा कि नहीं, हितायु भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो हम सब में होना चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद इहलोक और परलोक दोनों को सुधार देता है ना। तो कहीं ना कहीं वो हितायु के माध्यम से संभव है। इसीलिए आचार रसायन में दी बेस्ट रसायन को आचार रसायन माना है ना। कि अच्छा खाना पीना ये वो सारी चीज तो है ही, मगर आचार रसायन के माध्यम से भी हम बहुत चीज अच्छी कर सकते हैं। और मैं आज आचार रसायन को इसलिए भी याद कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो हमारे साथ तो वो बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, है ना।
क्योंकि वही 5-10 मिनट की बात होती है। मगर जब मैं डिटेल में उनके जीवन में झांकती हूँ, तो वहाँ आचार जन्य कमियां मिलती है ना? तो वो भी आप ध्यान रखिए अपने पेशेंट में, है ना? और मैं जब जयपुर में थी तब हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहती थी, पीजी स्कॉलर को, कि अगर कोई पेशेंट का बिहेवियर कुछ ज्यादा आपत्तिजनक लगता है हमें, तो मुझे इन्फॉर्म करिए। तो मैं उस पेशेंट की अलग से काउंसलिंग करती थी कि बेटा तुम चाहती हो कि तुम ठीक हो जाओ? तो कहते हैं हाँ मैडम बिल्कुल चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटा हमारे साथ अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह बोल रही हूँ ना? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा बेटा हमारे साथ अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स के साथ वहाँ उपक्रम कक्ष में पीजी स्कॉलर्स के साथ सभी के साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, तभी भगवान तुम्हें ठीक कर देगा फटाफट, है ना? बाकी मैंने कहा तुम हमें कुछ बुरा भी बोलोगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वी आर सर्विस प्रोवाइडर, है ना? तो ये हमें तो कोई बात नहीं जी, अभी करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही बोलेंगे हम तो, है ना? मगर ये आपके लिए बहुत अच्छा है, नॉट ओनली फॉर अस, आप समाज में भी जहाँ चाहते हैं वहां भी अच्छा बिहेवियर रखिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप दब के रहिए, आप गलत चीजों को सहन करिए, नहीं। वहां भी आप अपना पक्ष शांति से रख सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं सहृदयता अगर जीवन के प्रत्येक पक्ष में पेशेंट रखता है, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसा मैंने अपने 26-27 साल के कैरियर में देखा कि जो पेशेंट अ, कहीं न कहीं सहकार की भावना में अपने जीवन में, है ना? हमारे साथ तो रहेंगे ही, अपने जीवन में रहते हैं, उनमें रिज़ल्ट जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि हम सिर्फ़ यष्टि मधु, गुडुचि, अश्वगंधा, जटामांसी, है ना? इसके सिवा ये भी बड़ा सबल पक्ष है, उसके ऊपर भी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है आहार, विहार और मानसिक भाव, है ना? तो तीनों में अगर निदान जन्य आपको कुछ मिले तो उसका जरूर ध्यान रखिए। बाकी मैडम का लेक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और मैडम का मैं पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार मैडम, धन्यवाद जी। और लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने हिस्सेदारी का आयुर्वेद के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो आप सभी निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। चंद्रकला जी बहुत बहुत धन्यवाद।